कर दी होगी. So very good morning everyone, very good morning and welcome to the day 0 of the magic book journey, and we will be continuing with where we left off yesterday. So very good morning and welcome to this magic book journey. बाकी सब लोग जो कॉल पे हैं आप भी अपने आप को अनम्यूट करके गुड मॉर्निंग कर सकते हो. इट्स पोलाइट टू विश ईच अदर गुड मॉर्निंग एंड आल्सो आई नो दैट other people. Good morning, Annie. Yeah. Good morning. Good morning. Very good morning. Nice. Good morning. Very good morning. Good morning and welcome. Welcome to your magic book journey. Nice to see you all. You can also turn on your videos. It's understandable कि आप में से कोई भी मेकअप में नहीं होगा. So it's okay. ठीक है, we're all in the same state at the moment. Good to see you. All right. तो कल जब हम मिले थे, कल हमने magic book start करी. कल हमने पढ़ा कि what does this magic book contain? इसके contents क्या हैं? What is the context of this book? And that's how we started. Anybody who has done and wants to share, आपने कल सीक्रेट मूवी देखी? How was that for you? किस ने देखी कल सीक्रेट मूवी? आप में से किस ने कल सीक्रेट मूवी देखी? Okay, Isha ji saw it. What about others? Ritika ji ने देखी. All right. What about others? नहीं देखी तो you can say नहीं देखी. Somebody who has not seen secret movie even once. All right. Charul ji ne dekhi. Sumita ji has seen. All right. Vidhi saw. All right. You saw a couple days ago. All right. Okay. Ravi ji saw. Sumita ji will see again today. Good. Because मेरी आप सबसे request है, if you saw yesterday, it's wonderful. See it again. ठीक है, मतलब don't be like हाँ मैंने 6 महीने पहले देखी थी, so I know what it's about. See it afresh. Like अभी हमने ये session start करने से पहले सिर्फ 5 मिनट मूवी लगाई, but आप में से जिसने अभी ये 5 मिनट देखा, उसमें भी आपको अपने लिए कुछ सीखने को मिला कि हाँ यार, this is what the frequency is and this is how our emotions are. If any of you saw these 5 minutes of secret movie that we played and you learned something new, just write down yes or just say yes. That has something new opened up. That, oh, this is something that I'm still not implementing. Or this is something that, you know, there is a scope of improvement. So it's always nice to see it. ठीक है, और कोई कुछ share करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं before we start? किसी को कुछ share करना है, कुछ पूछना है? Isha ji, it's nice to see you. Can you introduce yourself? Like if it's your first time or you've done it before? Can't hear you. Can't hear you. All right. Anybody else who wants to share? क्या आपका ये magic? Yes, now I can. Actually, I'm not. I haven't done it first time. Have not done it. And I'm really good. So yeah, I can't hear you. आपकी आवाज काफी हल्की आ रही है, तो समझने में दिक्कत आ रही है. All right. Okay. Somebody else who wants to introduce themselves, just unmute yourself. Where are you from and what is... So आज का chapter अभी हम पढ़ेंगे will be about your dreams, right? About what you want to accomplish out of this journey. So some of you, if you would like to share, what do you want to accomplish out of your participation? That's it. Hello, Annie. हाँ जी. This is Kusum from Indore, Yeah. MP Indore. और अभी मैंने लगभग 2 महीने पहले मैजिक बुक फर्स्ट टाइम किया था, और जसबीर सिंह चावला सर जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं उनके अंडर में. और उसके बाद सब डेली फिर मैम का जो अश्विन मैम का अभी 15 डेज का मनी मैग्नेट का क्लास हुआ था. और अब ऐसा हो गया है कि हर पल वो थैंक यू हर मतलब नींद में भी चलता रहता है, इस चीज के लिए थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू. और अब मतलब कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, कुछ भी चाहिए या कुछ भी करना है तो थैंक यू गॉड ये हो गया है, और वो चीज एक्चुअली हो जाती है. जैसा कि मेरा जॉब है सेल्स में,
तो पहले काफी स्लो था वर्क, और अब तो कोई इशू ही नहीं है। एवरीथिंग सब कुछ बहुत अच्छे से चलने लग गया है। चाहे बहुत मतलब बच्चे की हेल्थ हो या फिर मतलब फाइनेंशियल स्टेज में हो, कहीं पर भी कोई इशू नहीं होता है। रिलेशनशिप भी सबसे अच्छा हो गया है। एवरीथिंग इज टू गुड। तो really मैजिक रियल में होता है, ये हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छे। थैंक यू कुसुम जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। Okay. Anybody else who wants to share before we start? विवेक जी, आपको देख के ही बहुत अच्छा लगा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत समय के बाद आपको देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द जर्नी। Yes, Annie, can I share? यस रूपल जी, Good morning. गुड मॉर्निंग। And thanks a lot. You're looking beautiful. Always amazing. Belated happy birthday to you. Annie, I have joined the magic book like March में जब भी मैम ने सेशन चालू किया था. I cannot join that time, but afterwards my sister forced me into this. Okay, Rupal, you just try once, you will feel very amazing. And I say started after in 28th March or something. And believe me, whatever I just think a day, because my practice of Brahma Muhurat prayers, I keep always. I mean, whatever I miss, it's okay. But Brahma Muhurat ka prayers मैं कभी भी miss नहीं करती हूँ. So it's that कि whatever I have, I'm running my own blood bank in Mumbai. So like सुबह सोचती भी हूँ ना कि यार अब स्टॉक बहुत हो गया, एक्सपायरी नजदीक आ रही है, 4 A पॉजिटिव पड़े, क्या करूँ? बिलीव मी, उस दिन 8 A पॉजिटिव का कॉल आ जाता है. Like it's amazing. Everything what I think I get. What I think I get. The small things, daily routine things. और मैजिक तो डोंट बिलीव मी, वो मैम बोलती है कि अरे भाई मत पूछो मैजिक का. तो लाइक एवरीथिंग इट इज हैपनिंग, लाइक वॉट एवर यू डिजायर फुलफिल, वॉट एवर यू डिजायर फुलफिल. वेरी गुड। Thanks a lot, really, from the heart to you, Rajan sir, ma'am, सबको. And that money magnet course was amazing, that I'm open and receptive to all the good and abundance in the universe now. Oh my, superb it was. Thanks a lot for everything, dear. थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग एंड मेकिंग योर लाइफ मैजिकल। सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Thank you, dear. Yeah. All right, so with that, let's start. Let's complete the day 0. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है टू बी अटेंटिव, सिट स्ट्रेट एंड जब रीडर चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसको सिर्फ सुने ना। जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे या आपके पास आपकी मैजिक बुक होगी तो उसको साथ के साथ पढ़े भी, लाइक विद योर आईज, एंड इट्स सजेस्टेड अगर आप बोल भी सके साथ के साथ साथ। तो चलिए, लेट्स कंटिन्यू। Will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving, and the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. So this is what The golden yesterday, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, and now we continue further. thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of the humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said thank you before he performed each miracle. So if you really look at it, आप जिस भी भगवान पे मानते हैं, कृष्णा जी पे, बुद्धा पे, मोहम्मद, so any teaching, whether you take
होली बाइबल और गीता और कुरान और गुरु ग्रंथ साहब जी और एनी टीचिंग फॉर दैट मैटर, है ना, उनके वेज ऑफ एक्शंस, वेज ऑफ कस्टम्स थोड़े अलग अलग हो सकते हैं, मगर वो बात जो कर रहे हैं इज मोर और लेस द सेम. The core message that they wanted to convey to their disciples, or you and me, is to practice gratitude. Like in this, Jesus is saying that before he performed each miracle, he said thank you for it, like it's gone wonderfully well already. Similarly, Buddha ji is saying that you have no cause for anything but joy. कोई भी चीज आपकी लाइफ में आ रही है, अच्छी आ रही है, अच्छी नहीं भी आ रही है, but still you always got something to be grateful about. There's always something nice that's happening in your life that you can be really glad about, right? So this is basically trying to, so that is why it says that this book is not a religious book in its nature, because it's talking about the common thread. अच्छा, एक चीज मुझे पूछनी है, कल ना किसी का मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि आप हिंदी में बात करें, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में, क्योंकि ये थोड़ा नेचुरल आता है, आप बोले सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेन करना है तो हम हिंदी में भी कर सकते हैं, आप बोले ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हैं, आप बोले इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में कर सकते हैं, जैसे आप बोले अभी जैसे है वैसे ठीक है, या हिंदी का उपयोग ज्यादा करें तो हिंदी में बात कर सकते हैं, क्योंकि कल किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था तभी उसके सब चैट हेलो मैम हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, मिक्स. ठीक है, ऑल राइट. मेरी आवाज है ओके. मेरे कहने का मतलब है, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी चीज समझ ना आए तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा, चैट में डाल दीजिएगा कि यानी इसको प्लीज दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, कि कुछ भी ऐसा आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट फील होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. These words are from Shawnee Native American leader Tecumseh. History is laden with famous figures who practice gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. हाँ, सो ये एक तरीके से वो जो कॉमन थ्रेड, ठीक है, अगर आप भगवान इन द सेंस उनको, जिनको बहुत बड़ी कम्युनिटीज लुक अप टू करती है, आप उनको देखो तो वो भी उस कॉमन थ्रेड के बारे में बात कर रहे हैं. उसी प्रकार अगर आप इन लोगों को देखो जिनको हो सकता है गए हुए इतने साल हो गए हैं, है ना, दे हैव बीन डेड फॉर सो मेनी इयर्स, एंड जिनको आप अपनी अपनी फील्ड का लेजेंड बोल सकते हो, है ना, वेदर वो फ्रीडम फाइटिंग में लेजेंडरी थे, या पेंटिंग के अंदर लेजेंडरी थे, या एज लिटरेचर के अंदर लेजेंडरी थे, या पेंटिंग उसमें थे, या साइंस में फिजिक्स में लेजेंडरी थे. ये सारे लोग जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिसको बच्चा बच्चा जानता होगा टाइप्स, है ना. जैसे आप से वो फ्रीडम मूवमेंट, ओ गांधी, अच्छा अफ्रो अमेरिकन, अच्छा मार्टिन लूथर किंग. आप जैसे आपके मुंह पे सबसे पहले कोई साइंटिस्ट बोलता है, दिमाग में क्या आता है? आइंस्टाइन. उन्हें गए हुए इतने साल हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कि उसके बाद साइंटिस्ट नहीं आए हैं, मगर उन्होंने अपनी फील्ड के अंदर एक ऐसे मार्क छोड़ा कि लोग इतने सालों के बाद भी, सेंचुरीज के बाद भी, दे रिमेम्बर देम. तो ऐसा क्यों है? उनमें ऐसा क्या था? ठीक है, अक्ल होनी एक चीज थी, आई एम श्योर उसके बाद भी बहुत सारे लोगों में अक्ल आई होगी, बट व्हाट वाज इट इन देम दैट जो उसके बाद वाले लोग. सो ये जो बुक है इज गोइंग टू टीच अस दोस सीक्रेट्स जो इन लोगों ने अपनी लाइफ में अप्लाई किए, है ना. फर्क नहीं पड़ता आप किस फील्ड में, फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्लड बैंक चलाते हैं, या आप कोई प्रोफेशनल है, या आप कोई म्यूजिशियन है, या आप होम मेकर हैं, या आप एक स्टूडेंट हैं, या आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं. इट डज नॉट मैटर व्हाट यू डू प्रोफेशनली, या आप लड़का हैं या लड़की हैं, या छोटे हैं या बड़े हैं, नहीं.
चलिए आगे पढ़ते हैं. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to the others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet still, gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. हाँ जी. So यहाँ पे अभी हमने आइंस्टाइन, न्यूटन, ये नाम सुने हुए हैं आप लोगों ने? Have you heard these names before? Newton, Einstein, sounds familiar? And all of them talked about the same things. They talked about how they practiced gratitude to make their life the way it turned out. They talked about how they practiced gratitude daily in order to make their life as magical as it could be, right? So this is how they practiced it. मगर उनकी लाइफ में उन्होंने क्या मैजिक्स क्रिएट has little or nothing to do with the magics that you will create in your life. ठीक है, लोगों को पता हो, आपने अपने बड़ों से सुना होगा, है ना, जैसे दादू दादी कहते हैं, बेटा अच्छा अच्छा सोचा करो, बेटा शुभ शुभ बोला करो, बेटा शुभ शुभ देखा करो, है ना. बेचारे गांधी जी में बोल दिया कि बेटा अच्छी अच्छी चीजें देखा करो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो. उन्होंने बोल दिया. But for us it was just like whatever. हाँ उन्हें कुछ तो बोलना ही था, ये बोल के चले गए. How does it matter? है ना. But that's not true. It's got so much deeper impact on the quality of life that you live, and also on the kind of magics you either attract or repel in your life. Okay, so let's read further. Thank you. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude, and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure, I'm a grateful person. I say thank you whenever I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasions certainly did not make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt, and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous, because I never seemed to have enough time for each person. While I was what would be termed as healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illnesses going around each season. I had moments of happiness when I went out with my friends or when I went on a vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. Yeah, so in this, Rhonda is sharing how her life was, है ना. आप अपनी लाइफ देखो, अभी भी देखो, and हो सकता है आपने मैजिक बुक 100 बार 1000 बार पहले करी हुई. It doesn't matter. My request and invitation would be like, really look at fresh and look at how your life is right now. Like, is it like, मैं अगर अपनी लाइफ देखूं, अच्छा ठीक है, this is, मैं अपनी, चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ, I'll be more comfortable talking that way, है ना. मतलब सुबह उठे, काम पे जा रहे हो, अच्छा ठीक है, काम अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, मतलब
Do you feel excited about your life? Do you feel your life is exactly how you would have wanted it to be? Or is it just like, हाँ ठीक है, बहुत काम करते हैं, में लगता है चलो ठीक है, कम से कम दिन तो खत्म हुआ. सुबह उठते हो तो लगता है अरे यार चलो अब एक और दिन है, अरे सेम काम सेम सब कुछ. Do you feel like क्या nonsense? Is this how you feeling about life? अरे चलो यार छुट्टियों पे जाना है यार. अच्छा टाइम तो सिर्फ तभी लगता है जब बीच पे बैठे हुए हो, है ना, एंड कोई आपको फोन नहीं मिला रहा है, आप आराम से अपनी ड्रिंक पी रहे हो. हाँ चलो ठीक है, 6 दिन में बीच पे बिताई, चलो अब तो मैं बहुत खुश हूँ. वापस आ गए तो सेम लाइफ सेम टू रियलिटी, है ना. अरे अब जो पिछले 6 दिन काम नहीं किया था, बस 6 दिन का काम करना होगा घर आके. थिंक अबाउट इट. मैं अपनी लाइफ देख रही हूँ, आप अपनी लाइफ देखो. मैं उससे पहले की लाइफ भी मुझे याद आ रही है, बट एनीवे, आप अपनी लाइफ देखो. फ्रेंड्स के साथ, हाँ फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहिए, मगर 3 महीने में एक ही बार मिलती हूँ. अरे ये कोई लाइफ है? मतलब मैं अपनी देख रही हूँ, आप अपनी देखो, है ना. लाइक डू यू थिंक यू लिविंग और जस्ट सर्वाइविंग? सर्वाइविंग का मतलब आपको पता ही होगा, चल रही है, कुछ गलत नहीं है, सफोकेटेड नहीं है, चल रही है लाइफ. बट इज इट लाइक, do you get out of bed feeling excited on top of the world like woohoo, आज का दिन तो बहुत rocking होने वाला है? Does that happen? If not, then probably just surviving, you know. चल रही है, हाँ ठीक है, कल 1000 रुपए कमाए थे, आज 2000, कल 10,000, you know, maybe over the years it's happening. But joy, excitement, rocket लग जाने लाइफ के अंदर. So let's see what happens. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt-free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. This Rhonda is talking about her life, right? And how gratitude changed her life completely. Simply, like if I was to share from my life, like me before gratitude and after gratitude is like completely different worlds. Although gratitude is something not like कि हाँ मैंने 2 साल पहले किया था तो अभी उसका effect नहीं. It's an ongoing practice. It's a daily practice. It's a daily way of life that you choose to be in. है ना. तो मुझे जब उसको किया था, I'm like, ओहो, लाइफ में इतनी एक्साइटमेंट, काम को लेके, ट्रैवल को लेके, खुद ब खुद ऐसे एक्साइटिंग लोग मेरी लाइफ में आने लग गए. उन एक्साइटिंग लोगों के साथ मतलब एवरी सिंगल थिंग, क्लाइंट्स की मतलब ऐसे बारिश होने लग गई. They are coming to me, Annie, मुझे आपके साथ काम करना है. Like, मैम बट इस डेट के इतनी पेमेंट लगेगी because this thing, no problem, जो आप बोलो, it's fine. So it is magical, right? Like people are coming your way and doing things the way you want it to happen. Now this is magical for me, right? Now you would know what is magical for you. And now the next section जो हम पढ़ने जा रहे हैं is about bringing the magic into your life. ठीक है, whether it's health, fitness, career, money, vacations. हो सकता है आपको अपनी जो present routine है, you know, maybe you're a homemaker and your routine's very same, and you're like, क्या है ये life? ये करने के लिए पैदा हुई थी क्या मैं? है ना? Maybe that's how you feel.
I'm telling you, irrespective of what your profession is, irrespective, your life can be as magical as you want it to be. ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कैसे मैजिक को आपको अपनी लाइफ में जाना है, कैसे वो अपना जादू करेगा. आगे बढ़ते हैं. Bring the magic into your life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous, and I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. है ना, आप अपनी लाइफ में देखिए. आई होप आप सब लोग अपना रजिस्टर साथ लेके बैठे हैं, है ना. जैसे यहाँ पे उसने बोला, देखिए फर्क नहीं पड़ता आप अभी किस स्थिति, like what stage of life you're in, है ना. You could be on top of everything in the sense, you know, acing it, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. या हो सकता है आपने अभी अभी अपनी जॉब लूज करी हो and you're dealing with a breakdown. Irrespective of that, you know, you could have been in depression all your life and you want to be happy and you want to be, you know, really express yourself and whatever it is that you want, whatever it is that you want, whatever it is that you want to be, do or have is possible out of your practice of gratitude. ये मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैंने अनुभव किया अपनी लाइफ के अंदर. जब इसको प्रैक्टिस किया है तब इसके मैजिकल बेनिफिट्स आते हैं. मगर जब आपको लगेगा, oh, I know what gratitude is, oh, I know how this works, that's when it will stop working its magic, because now you've grown overconfident and you're probably not practicing what it's asking you to do. You're probably just in your head saying, oh, I know how this works, but you're not really getting down to do what it's asking you to do. So it will stop working. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may still come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. Is your life magical? See, now we are getting down to actually understanding and checking, है ना. मतलब अभी उसने ऊपर बोला bring the magic into your life. ठीक है, आप ले आओगे, मगर पहले पता तो होना चाहिए ना अभी आप किस लेवल पे खड़े हो. अपनी रिपोर्ट कार्ड पता होगी तभी तो पता चलेगा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है ना. तो अभी आपको ये बताएगा कैसे चेक करना है. मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आई होप आप सब लोग इंडिविजुअली बैठे हुए हैं ना, एंड आपके आसपास कोई नहीं बैठा जो आपको ऐसे ऐसे कर रहा है कि देख देख तेरे बारे में बात कर रही है. नहीं, दिस बुक इज अबाउट यू एंड दिस बुक इज अबाउट योर प्रैक्टिस. अभी जो ये आपसे अभी बताएगा कैसे आपने अपने आप को चेक करना है, आप अपनी लाइफ को ऑनेस्टली स्कैन कीजिएगा एंड वो जो भी आपका आंसर आएगा उसको अपनी नोटबुक पे लिख लेना. Tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all of the major areas in your life: money, health, happiness,
career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. Okay, I'll pause here. Everybody, open your register. Everybody has a register, right? Make some heads. Heads banaiye. Write down health, money, family के साथ relationships, friends के साथ relationships, आपकी vacations, आपका career, आपके career को लेके growth, whatever areas you can think of, कुछ और भी हो सकते हैं, हो सकता है आप कोई awards चाहते हो, कोई promotions चाहते हो, जो चीजें अभी आपकी business opportunities हो सकती हैं, business growth opportunities हो सकती हैं, whatever it is that you're looking for, ठीक है, आप हो सकता है देख रहे हो, maybe you want to look a certain way, right? And you're not looking that certain way. So that is an area of your life, right? Like fitness. Then हो सकता है खाना. Maybe आप जो अभी खाना खा रहे हो, maybe you're happy with it, maybe you're not happy with it. So for some people, food is a very important area of life. For some, अब आपने ये areas लिखे, simple सी बात है, जो इनमें से areas बिल्कुल वैसे चल रहे हैं, the way you want them to be, the way you want them to be, उसके सामने टिक कर दो. और जो areas वैसे नहीं चल रहे हैं, the way you would want them to be, like for example, you want to earn say 10 rupees every month, but right now you're just earning 5 rupees, right? So your dream is to have 10 rupees, but it's just not happening. तो money के सामने क्रॉस लगा दो कि अभी money में मेरा breakdown चल रहा है, अभी money में magics नहीं चल रहा है, ठीक है? हो सकता है आपको नए clients के orders चाहिए, अभी नए clients के orders वैसे नहीं चल रहे हैं, the way you would want it to be, तो उसके सामने क्रॉस लगा दो. अगर चल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं, the way you would want it to be, तो टिक कर दो. Everybody just do it. Once you've done it, just write down in the chat box, done. ठीक है? All right. It's very simple. टिक करना, क्रॉस करना, ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है. Just जब हो जाए done बोल देना. किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए, ताकि आपके पास अपनी रिपोर्ट कार्ड दिख जाए कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में अभी एट दिस मोमेंट कौन कौन से एरियाज में आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करा है और किस किस में नहीं करा. कोई गलत या सही बात नहीं है, जिसमें नहीं किया उसमें क्या कर लेंगे, है ना? आगे बढ़ रहे. It is a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you're not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. The bottom line of ungratefulness is that when we were not grateful, we are taking things in life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. एक सेकेंड. सो इससे ऊपर जो पैराग्राफ था ना, जिसमें उसने अनग्रेटफुलनेस के बारे में बात की थी, हमें लगता है, देखिए सिंपल सी बात है, या तो आप ग्रेटफुल हो या ग्रेटफुल नहीं हो, है ना? इसमें कोई मतलब और चीज नहीं हो सकती है, या तो आपने थैंक यू करा या थैंक यू नहीं करा. देयर इज नथिंग, देयर इज नो ग्रे एरिया इन दिस, राइट? सो हमें क्या लगता है, हाँ ठीक है, थैंक यू नहीं करा, क्या फर्क पड़ता है, मतलब व्हाटएवर, ठीक है ना, हाँ ठीक है, अभी मेरे नाक के अंदर सांस आ रही है, मैं जिंदा हूँ, पर मैं नहीं थैंक यू कर रही इस हवा को. सो व्हाट डज इट मैटर, है ना? मैं बैठी हूँ यहाँ पे इस चेयर के ऊपर, जिस वजह से मैं कंफर्टेबली बैठी हूँ, आपसे बात कर सकती हूँ, कंफर्टेबल चेयर है, पर मैं नहीं थैंक यू कर रही इस चेयर को. हाउ डज इट मैटर, है ना? व्हेन वी आर, मैंने अगर ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने इस चेयर का थैंक यू नहीं किया, तो नहीं किया ना, मतलब उसे अनग्रेटफुलनेस की कैटेगरी में डालोगे ना, आप ग्रेटफुलनेस में थोड़ा ना डालोगे.
तो आप मुझे ही नहीं पता कि मेरा थैंक यू ना करना इस चेयर बेचारी का क्या होगा नहीं होगा, तो मुझे पता नहीं, है ना। मगर आई एम टेकिंग, ऊपर एक लाइन आई थी, आई एम टेकिंग फ्रॉम माई लाइफ इन द सेंस, rather than having more and more abundance in my life, मैं खुद ब खुद उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ बाय टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हाँ ठीक है, घर पे शेफ ने खाना बना दिया, क्या बड़ी बात है। हाँ ठीक है, मम्मी ने मेरी हेल्प कर दी कोई काम करने में, क्या बड़ी बात है। हाँ ठीक है, पापा ले आए, पापा ने इसके ऊपर पैसे खर्चे, पूरा घर बनवा दिया, क्या बड़ी बात है, हर पापा बनवाते। टेकिंग थिंग्स, इसे टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड कहते हैं, है ना। हाँ ठीक है, हाँ दोस्तों ने बोल दिया चलो मिल लेते, तो क्या बड़ी बात है, दोस्तों को काम है मिलना। इसी प्रकार टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, उन बेचारों का क्या होगा नहीं होगा तो पता नहीं, बट डेफिनेटली माय सर्कल ऑफ लाइफ, माय क्वालिटी ऑफ लाइफ विल स्पाइरल डाउन। तो जो इनिशियली आपने देखा होगा, आपने ये एग्जाम्पल में थोड़ा देना चाहूंगी बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। आपने देखा होगा, आपने अपने घर में ना कोई नई नई फॉर एग्जाम्पल हेल्प को हायर करा है ना, जो साफ सफाई करती है। आपने देखा होगा जब वो पहले पहले आती है ना, तो बड़े जोश के साथ काम करती है, क्योंकि ना आप उसे जानते हो ना वो आपको जानती है ना। वो आती है, वो फ्रिज भी चमका रही होती है, वो स्टोव भी चमका रही होती है, वो सब कुछ रगड़ रगड़ के साफ कर रही होती है, एवरीथिंग इज फाइन। अब उस बेचारी ने, अब उसका काम है सफाई करना, वो सफाई कर रही है। आप में से किस किसने ऑब्जर्व किया है कि एज टाइम गोज बाय, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो किसी दिन काम पे लेट आ गई है ना, आपने उसको डांट लगा दी, तुम काम पे लेट आती हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी लेट आने की वजह से पूरा घर का ये हो गया, सब्जी कौन काटेगा, ये कौन काटेगा, लंच बनाने में देर हो गई, ला 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 ला। आपने कुछ बोला, उस बेचारी ने क्या ही बोलना था आपको, वापस वो खड़ी हो गई, उसने काम कर दिया, माफी मांग ली होगी। मगर समवेयर आपके और उस हाउस हेल्प का रिलेशनशिप कहीं कम हो गया, एंड पहले इनिशियली जो वो मन लगा के ऐसे रगड़ाई कर करके सफाइयां करी थी, नाउ शी इज जस्ट लाइक व्हाटएवर। अब वो हाथ झाड़ू लगा लेती है, बट यू कैन फील दैट इट्स नॉट एज रिगरस एज इट यूज्ड टू बी। एनीबडी लाइक दैट? एनीबडी एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दिस? यस, नो? दिस इज फॉर ऑल द पीपल हु टेक केयर ऑफ द होम। आपने जो बिजनेस ओनर्स है, आपने अपने एम्प्लॉइज के साथ अनुभव किया होगा। आपका एम्प्लॉय जब नया नया बिजनेस के अंदर आया था, तो फुल ऑफ जोश, yes sir we can do this, yes sir we can do that, and over time you knew that he's also wasting time, and and so you need to understand, taking things for granted, उस बेचारी का क्या होगा नहीं होगा तो पता नहीं, but definitely आपके whatever you wanted, उसकी efficiency spiral down करनी start हो गई। तो अब हम सीखेंगे कि भैया देखो, अनग्रेटफुल होने से अगर काम हो रहा होता तो बहुत अच्छी बात थी, बट इट्स नॉट एन इफेक्टिव वे ऑफ वर्किंग, इट्स नॉट गुड फॉर मी, राइट? इट्स नॉट गुड फॉर मेकिंग माई लाइफ मैजिकल। तो अगर एक चीज समझ में आ गई कि ब्रो दैट डजंट वर्क, तो व्हाट वर्क्स? इट्स वेरी स्टूपिड ना दैट वी कीप ऑन रिपीटिंग एक्शंस दैट आर इनइफेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे द मैजिक फॉर्मूला। Magic formula means you take this formula, you apply it to any area of your life and you experience the magics. Simple, like कभी आपने सोचा था, अच्छा अभी पैसे नहीं आ रहे ना, अभी उतने पैसे नहीं कमा रहे जितना कमाना चाहते हो, मैजिक फॉर्मूला लो, उसको अप्लाई करो, उस पैसे के अंदर अबंडेंस आ जाएगी। अभी रिलेशनशिप्स में बैंड बची हुई है, बहुत लोगों के साथ झगड़े हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा उस झगड़े से बाहर कैसे निकलना है, ये मैजिक फॉर्मूला लो, उसको उसमें अप्लाई करो एंड देखो उसके अंदर रिलेशनशिप कैसे फ्लरिश होने लग जाएगा। अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या? आप में से किस किस ने आज तक, और मैं आबरा कटाबरा की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जो आपने मूवीज में देखा उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आप में से किस किस ने आज तक किसी भी प्रकार की स्कूल या लिटरेचर बुक में एक ऐसे फॉर्मूला को जाना है कि इस फॉर्मूला को बस पकड़ो, इस्तेमाल करो एंड मैजिक, उस एरिया को मैजिकल बना दो? एनीबडी? If you learned anything like this in your school, college, masters? Yes, no? I'm sure we have people from different backgrounds, science, commerce, arts, maybe किसी ने सीखा भी हो. Right, so now I expect you to be on the edge of your seat, and मेरी request है जिन्होंने magic book पहले भी पढ़ी है, listen to this like you have absolutely no idea what it's talking about.
The magic formula. Ibn Khaldun al-Muqaddimah, who was a scholar and a statesman, he has said, knowledge is the treasure, but practice is the key to it. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way. And first you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. And यहाँ पे ना उसने देखो उसने आपको मैजिक फॉर्मूला बताने से पहले उसने एक लाइन डाल दी है, नॉलेज इज अ ट्रेजर. You know, it's like you're Ali Baba and आपके सामने वो पूरा खजाना पड़ा हुआ है, and so you can see that, oh look, अरे देखो वहाँ पे वो सोना पड़ा है, देखो वहाँ छुट्टियां पड़ी हैं, अरे देखो वहाँ खुशियां पड़ी हैं, वहाँ पे लाफ्टर है, वहाँ पे फ्रेंड्स है, वहाँ पे लव है, वहाँ पे सुंदर हॉट सी बॉडी है. You can see that there's treasure, but वो ट्रेजर आपको दिख तो रहा है, मगर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अगर आपको लगता है ना आप सिर्फ इस क्लास में आ जाओगे, जब 1 घंटा मिलते हैं, इसके अंदर जो एनी कुछ बोलेगी, मैं कुछ पढ़ूंगा, मेरे को समझ में आ जाएगा, ये सफिशिएंट है, ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है. आप इस क्लास में भले ना आओ, इज फाइन. आप अपनी मैजिक बुक पकड़ो, मैजिक बुक को खुद प्रैक्टिस कर लो, वो फिर भी बेटर है. ये तो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ताकि हमारी आदत बनी रहे कि हमने डेली प्रैक्टिस करना है ना. बट this is not practice. What you and I are doing right now, 7 to 8, is not practice. Practice will be after 8 o'clock. Practice will be after 8 o'clock when you are sitting and you are doing what the book will ask you to do. Okay? So just wanted to clarify it on the day 0 itself. All right, let's read the magic formula. The magic formula. Deliberately think and say the magic words, thank you. The more you deliberately think and say the magic words, thank you, the more gratitude you feel. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. Gratitude is a feeling. So the ultimate aim is practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can. Because it is the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude in your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. Yeah, so that is the magical formula. आपने उसके 3 steps पढ़े होंगे, है ना. सबसे पहला है आपको ना ये deliberately करना होगा. किसी भी गलत फहमी में मत रहना कि मेरे को नेचुरली थैंक यू आ जाएगा बोलना और मेरे को नेचुरली फीलिंग्स आ जाएंगी थैंकफुलनेस की. नहीं आएंगी, इनिशियली तो बिल्कुल नहीं आएंगी. आपको अपने आप को जानबूझ के, डेलिबरेटली को हिंदी में जानबूझ के कहते हैं, है ना. आपको जानबूझ के, यू हैव टू से थैंक यू एज मच एज यू कैन. लाइक, oh thank you यार, thank you 67 people of you who are here at 7 AM. आप इस मैजिक बुक में आए हैं, इस वजह से मैं भी ये बुक को पढ़ रही हूँ इतने समय के बाद, and I am, a lot of things are opening up for me. So thank you to all of you for being on this call. And thank you to this chair. It's actually very comfortable, and I'm so glad that this chair was just here for me. I didn't have to buy it. My parents probably bought it and kept it here in this office. So thank you. Thank you to this jacket that I could wear, and I'm here and I'm feeling nice and comfortable sitting here. I'm thankful for this fan, because of which there's a good temperature in this room.
Thank you must become two words that you deliberately say and feel more than any other words. जानबूझ के, ठीक है? और आप जितना ज्यादा इसको जानबूझ के आप फील करेंगे ग्रेटिट्यूड, उतनी ज्यादा अबंडेंस ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आएगी. और उस फॉर्मूला के साथ ना उसने आपको ये नीचे वो भी दे दिया है. थोड़ा सा फील करोगे, थोड़े बहुत छोटे छोटे वाले मैजिक्स आएंगे. ज्यादा फील करोगे, है ना, दिन में और कुछ काम मत करो. अगर आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड को इंक्रीज कर दोगे, आप खुद ब खुद देखोगे आपकी लाइफ में वो सारी चीजें चमत्कार की तरह, they will start to, things that you wanted since forever will itself start falling into place. I'm saying it, you know, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ, है नहीं, देख तूने जब जब प्रैक्टिस की थी तब तक तेरी लाइफ में मैजिक्स आए थे. आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि एनी ये बुक करा रही है तो एनी इज द एपिटोम ऑफ दिस. नॉट इवन क्लोज, नॉट एट ऑल. जब जब प्रैक्टिस किया तब तक लाइफ में मैजिक आया. जब जब प्रैक्टिस नहीं किया और लगा हाँ हाँ पता है थैंकफुल होना चाहिए, बट थैंकफुल नहीं हुई, काम नहीं करा. ठीक है. सो दिस बुक इज 100% प्रैक्टिस. नो ज्ञान, नो नॉलेज इज ऑफ एनी यूज. आगे बढ़ते हैं. A magical book. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter the words, but to live by them. These words are from 35th President of the United States, John F. Kennedy. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desire and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. You will be captivated while you read this life-changing knowledge. But without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate yourself and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life, and fast. Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamed of. The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past. Because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true, and you will see the circumstances of your life magically change. The last 6 practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people, dissolve problems, and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. You don't need to clear your calendar because each of the practices has been specifically created to fit into your everyday life. Whether it's work days, weekends, holidays, or vacations, gratitude is portable. You take it with you wherever you go. And then wherever you go, the magic happens. If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. Yeah, so right now it's telling about कि ये book कैसे designed है, इसके chapters कैसे designed है ना? तो पहले 12 chapters कैसे हैं, फिर 10 chapters कैसे हैं, फिर 6 chapters कैसे हैं.
तो ये सिर्फ आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा है, बट बाकी हम एक एक करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एंड इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि आपको अपनी लाइफ में, देखिए आप यहाँ पे आए हैं, आपको जिसने भी इनवाइट किया है उन्होंने आपको बताया होगा, है ना, उनको अपने जीवन में कुछ ना कुछ जादू महसूस हुए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने आपको इनवाइट किया, या अगर आपने अपने आपको सेल्फ इनवाइट भी किया है इस बुक के अंदर, डजंट मैटर। मगर इस बुक का मैक्सिमम बेनिफिट होता है, मैक्सिमम बेनिफिट का मतलब जैसे देखो, एवरीबडी वांट्स क्विक रिजल्ट्स, एटलीस्ट इन टुडेज टाइम, है ना, कि यार मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ बट रिजल्ट कैसे दिखेंगे, है ना। तो उसी लिए इस बुक को आप डेली करेंगे 30 दिन तक। मोमेंटम बिल्ड होना जब स्टार्ट हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वो हैंडपंप होता है ना, आप हैंडपंप पे एक बार ऐसे करते हैं, एक बार ऐसे करते हैं, पहले तो इनिशियली थोड़ी हवाई निकलती है ना, पहले भी थोड़ा धीरे धीरे पानी निकलता है, बट यू कंटिन्यू पंपिंग एंड देन इवेंचुअली द मोमेंटम पिक्स अप एंड द वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग भर भर के। सिमिलरली, लाइक एज अ मेटाफोर, दिस इज हाउ इट विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। आप पहले थैंक यू की प्रैक्टिस करेंगे, ग्रेटिट्यूड जैसे भी ये बुक हमें बताएगी हम करेंगे, तो आपका ना मोमेंटम बिल्ड होने में समय लगेगा। अगर आपने बीच में एक भी दिन की छुट्टी मार ली तो वो मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा, वो मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा, तो उसके ऊपर दोबारा पहुंचने में आपको ज्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी छुट्टी ना ले, सुबह 7 से 8 बजे हमारी यहाँ पे क्लास होती है, उसी में आए, आपको अपनी असाइनमेंट भी पता चल जाएगी, हम लोग इकट्ठे मिलकर ड्वेल भी करेंगे एंड देन अपनी असाइनमेंट करें। मगर इफ फॉर एनी रीजन आप ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको छुट्टी मारनी पड़ रही है, रिकॉर्डिंग रहेगी, आप रिकॉर्डिंग से कर लीजिए। आपको लगता है अरे नहीं अभी तो मेरे पास रिकॉर्डिंग देखने का भी टाइम नहीं है, मेरे को मगर असाइनमेंट करनी है, आप सबके पास मैजिक बुक की पीडीएफ आपके साथ कल शेयर हो गई थी ग्रुप के अंदर, आप उस चैप्टर को खुद पढ़े, ओपन द चैप्टर, रीड द असाइनमेंट एंड देन प्रैक्टिस द असाइनमेंट। असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसमें नहीं आने कोई बड़ी बात नहीं है, मगर असाइनमेंट को जरूर कीजिएगा, क्योंकि असली निचोड़ जिसे कहते हैं दैट्स देयर। ऑलराइट, Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake. And I will tell you when to do this. You might want to read the next day's practice every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure to reread the practice again in the morning. If you don't want to follow the 28 magical practices consecutively, तो आप you can also use them in other life. इसको हम इकट्ठे ही पढ़ेंगे, सो दैट्स फाइन, ठीक है। उस लास्ट पैराग्राफ को मिस कर दिया। आफ्टर द 28 days वाला वी विल स्किप, बिकॉज ये जब बुक खत्म हो जाएगी, तो ये अभी ये वाला सेक्शन हमें बता रहा है कि जब बुक खत्म हो जाएगी तो उसके बाद क्या करना है। तो आई विल टेल यू जब बुक खत्म हो जाएगी तब क्या करना है, अभी हम इसको स्किप करते हैं। लेट्स कम टू द फन सेक्शन व्हिच इज योर ड्रीम्स, ठीक है। व्हाट आर योर ड्रीम्स? You know, the reason why you and I are here at 7 o'clock in the morning, probably wake up before that, यार अपनी लाइफ के इस एरिया को तो यार मैंने सचमुच ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। एनीबडी एक्साइटेड अबाउट दिस? यार ये सपने सच करने हैं। हेलो, यस, नो, हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है ऐसे भी हो सकता है ना। अरे मेरे पास दिन में और कुछ बेटर करने को नहीं था तो इसलिए मैं क्लास में आ गई, सपने सच हो गए तो भी बढ़िया, नहीं हुए तो भी बढ़िया। ऐसा कोई है? अगर ऐसा कोई है तो चलो जो यहाँ से just kidding। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं दिस सेक्शन। So this section is extremely important, critically important. You can sit with your notebook and pen and एक एक शब्द जो हम इसमें पढ़ेंगे, let's go. What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember
Your job is simply to list what you want and not how you're going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. Yeah, so this is extremely important. अभी इसकी डिटेल पे नहीं हम जाएंगे वो कि हाउ नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है. हम मैनिफेस्टेशन के वर्ल्ड में है ना, we're practicing magic. इस book का नाम ही magic है. So we'll allow this invisible magical realm to work on the how for us, because let's be honest, अगर आपको और मुझे पता होता अपने सपनों को सच कैसे करना है, तो हम आज की डेट में उन सपनों को सच कर चुके हो, है ना. अगर हमें पता होता कैसे करना है तो कर चुके होते, पर नहीं पता है. That's why it's still a dream, right? तो आपने क्या करना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नोटबुक और पेन से लिखिएगा. डोंट डू इट ऑन अ लैपटॉप. एंड जब आप ये काम करें तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस है उनको साइड पे रख देना. आपका टीवी, फोन, लैपटॉप, जस्ट कीप इट असाइड, कीप इट ऑल ऑन म्यूट so it's not disturbing you. Sit down and really make a list, like relationships. What is it that I'm looking for? Maybe with your friends, maybe with your parents, maybe with your partner, maybe with your employees, maybe with your boss, maybe with your, what is your dream if you have a dream in that? Maybe you have a dream about money, like, oh, I want to buy this watch, I want to buy PS5, I want to travel, I want to, whatever it is that you want. Maybe you want clients, you're not having that. Oh, I want to serve to these many clients in a month. Whatever your dream is. Health, maybe you want to lose weight. आपका काम है फाइनली क्या चाहिए. अगर आज आप 80 किलो के हैं और आप चाहते हैं मैं 60 किलो की होना चाहती हूँ, तो ये मत लिखिएगा कि मुझे 20 किलो लूज करना है. नहीं, ये लिखिएगा कि मैं 60 किलो की होना चाहती हूँ. फाइनली क्या चाहिए, एंड रिजल्ट में क्या चाहिए. अगर आपको अभी अपनी जॉब नहीं पसंद, देन हो सकता है आपको आपका बॉस डांट रहा है, तो ये नहीं लिखना कि आई डोंट वांट एन एंग्री बॉस, आई डोंट वांट टू फील आई डोंट वांट टू फील स्मॉल इन माय जॉब. ये नहीं लिखना है. क्या फील करना चाहते हो जॉब में वो लिखना है. maybe you want a very cordial relationship with your boss, or maybe you want to be at a senior position, maybe you want to be, say, vice president of your company, or maybe आपको पता होगा आपका सपना है ना. So this is, आगे अभी हम कुछ examples भी पढ़ते हैं. If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something, such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year.
As you think of more things, add them to the list. And as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. Great. So this is the importance. It's 8 o'clock, but we're going to stay here for a while. Okay. Yeah. So आज का आपका assignment है आपके सपने क्या है? ठीक है. What are your dreams? What is it that you want? And it doesn't matter अगर आपने अपनी ड्रीम लिस्ट पहले भी बनाई है, doesn't matter, make it fresh. ठीक है. अभी लैंग्वेज मुझसे कुछ मत पूछना कि किस लैंग्वेज में लिखना है, कैसे करना है, ऐसा कुछ मत पूछना. चाहते क्या हो? अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए अगर कुछ चाहते हो तो क्या चाहते हो, अपने बच्चों का मिशन चाहते हो तो कहाँ चाहते हो, जॉब चाहते हो तो कहाँ चाहते हो, कहीं घूमने जाना चाहते हो तो कहाँ जाना चाहते हो, कोई गाड़ी चाहिए तो कौन सी चाहिए. बट यू गॉट टू बी पर्टिकुलर. You can't just say, oh, I want a luxury car. No. Do you want a Mercedes? Do you want a Audi? Do you want a Honda City? Do you want a... What do you want? Which model do you want? Clear. आज का आपका काम है अपने सपनों के ऊपर होमवर्क करना. That what is it that you want for your life? पैसे चाहिए तो ये नहीं लिखना कि I want a lot of money. No. How much money? Maybe you want, say, for some people, 10,000 rupees per month is very good. For some people, 10 lakh per month is also not good. So how much money do you want and what do you want it for? एक चीज मैं बोलूंगी, इसमें ऐसे मत करना कि अरे कुछ भी मिल जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ 10 करोड़ चाहिए मुझे पर मंथ. अच्छा, क्या करोगे 10 करोड़ का? You've got to have a definite कि यार ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए ही चाहिए. ये नहीं कि और कुछ काम नहीं था इसलिए मैंने 10 करोड़ लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है. 10 करोड़ में 1 करोड़ भी मिल गया तो चलो गाड़ी तो चली जाएगी. ऐसे नहीं चलता ये वर्ल्ड. You've got to be exactly clear about what you want and why you want it, and you should have a burning desire for it. ठीक है. So this is today's assignment. आज का आपका काम है अपने सपनों को लिखना. I hope आप सब लोगों ने अपनी fresh notebook बना ली है ना, जिसमें आप अपना gratitude journal करेंगे, अपनी dream list को maintain रखेंगे. So thank you everyone for being a part of today's session. Now, before we take questions, before we take sharings, let's do gratitude. अपने हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, and give your thank you to any one good thing that happened yesterday. कल के दिन में जो आपकी सबसे अच्छी चीज रही उसको याद करें, स्कैन करें, याद करें और अपना दिल से थैंक यू. Thank you everyone for thank you for being in this journey. अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. अगर आपको लॉग ऑफ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं. हाँ जी, सुमिता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, good morning, Annie. My question is like, this is the second time I'm doing the book, Magic Book. I had seen many changes. What my requirement at the moment is like my eldest son, he's 14 years old. And yesterday I heard you that you were talking about landmark. Yeah. How landmark changed your steps towards your goals and all. He has certain dreams, he has certain desires. He takes that effort. I think because he is in his teens, there are certain distractions. And I had been manifesting things for him, like I want him to get this much marks and all. But I need to put that extra effort by showing him the right path. I feel it like that. So can you tell me how can these things be done by writing down in my dream list, number one, and how I can pursue it all together side by side also? Yes. So this is, so see, I am not a mother, but what you question is asking is similar to what my mother did for me, right? Like when I was younger, both for me and my brother, my mom, I saw her dream list, you know, when she got married, like 25 years ago, that she had written for herself, like her dream
marital relationship and her dream for her kids. So for me, she had written already pre-specified, how she wanted me to be, how the kind of person she wanted to raise me to be, and the kind of values she wanted to have me, मतलब मेरे में होनी चाहिए, या वो सारी चीजें उन्होंने ना लिखी हुई थी. So and see, आगे अभी हम 5 स्टेप्स सीखेंगे कैसे कैसे आपने उसको मैनिफेस्ट करना है, वो डे 13 पे आएगा आपके. मगर अगर आपका अपने बच्चे के लिए भी there is a dream, see there's got to be a bigger picture. Like, a lot of times we get stuck up on the small things. They say, for example, a lot of mothers say, my child should listen to me, my child should obey me and all of that. That's nice, that's wonderful, achhi baat hai. But what is the bigger picture that you have for your child? Like, in the sense, like, for me, my mother was like, my daughter is so respectful, so this, she's contributing to the world, and all the people come up to me and say, oh, aap Annie ki beti hai. She's a wonderful daughter. हम चाहते हैं हमारी बेटी भी आनी जैसी बने. That was her dream. What she saw. कि दूर दूर से लोग आके पूछते हैं आप एनी की मदर है. अरे एनी जैसी बेटी तो हमने आज तक नहीं देखी. That was her dream. Now whether I was in school or I was in marks or head girl or college or work or friends or adulting or whatever, her dream was consistent. Or I want to be on the receiving end of मेरी बेटी was this. So that way, and because her dream was clear, so then I fell into that. Because we're not going to talk about source relationship very directly at the moment, but it's very important that, as a parent, आपका अपने बच्चे के लिए bigger picture क्या है? Okay. And then बच्चे का लैंडमार्क करना या मैजिक बुक करना या बच्चा कुछ भी ना करे but घर का environment ही वैसा बन चुका है क्योंकि they get it, right? So they will themselves fall into place, I believe. At the moment, like I am only doing the magic book. My husband and my kids are not in this journey. I tried, but then it is never a forceful thing that you need to do. It has to come from within. That I have understood. See, I'll tell you. So for us also, when you mentioned landmark, so my mom did landmark first. And for I think the first 1.5 years, it was just her. And then eventually dad wanted to get in, so he got in, and I was like, okay, let me, because see, when I could see that something in my mother is changing, I was inquisitive that, okay, let me try it out. Yes. Because, and if she would have forced me into it, I would have been like, no, but you do you, right? You take care of yourself and you do all that the book is asking you to do on yourself. And you're doing this book for the second time. So I think it's... Yes, there has been changes. Yes. There has been certain changes in my life. Yeah, it's always a journey to have fun with, and whenever it will be their time, it will be their time. That's okay. But just say, आज की book में ये नहीं बोला कि your kids doing gratitude will change your life. It is you doing gratitude will change your life. Now your life has your kids as one of the important factors, right? So it is directly कि आप अपने उनके साथ कैसे करते हैं. Thank you so much, Annie. Thank you for the right guidance. Thank you. Daji, thank you for being in this journey and thank you for practicing it. Thank you so much. Yeah, thank you so much. और किसी का कोई प्रश्न? Good to see you, मीरा दी. आपकी वीडियो और देख के बहुत अच्छा लगा. Good morning. So we have a lot of our employees also, students also. हमारी academies है. They've also joined in. So nice to see you. Yes. Anybody else? Any question? आप कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ आप कहना चाहते हैं before we log on? Yeah, ma'am. I have a question. हाँ जी. Can we share our happiness to the people like who are jealous of us? Not at the moment. No. आपने magic book पहले करी है? नहीं नहीं. नहीं, I will not recommend that at the moment. At this moment, see, we're just starting off, right? Yeah. Just starting off, and it's very important कि आप अपने जो आप यहाँ पे practice कर रहे हो थोड़ा protect करके रखें. Like like अभी आपने बीज भी नहीं डाला है. आज तो हमने dreams का बीज डाला है ना? आप अगर कोई पौधा भी उगाते हैं तो आप उस बीज को डालने के बाद ऐसे देते हैं कि कोई भी चिड़िया आके उस बीज को खा ले. You protect it, you nurture it, you water it, you do all of that. So similarly, at this moment, we are starting off. So you expose it to a fruitful environment. हाँ, जब वो पेड़ बन जाएगा, पेड़ को कोई कुछ नहीं कर सकता.
है ना? अभी आप प्रोडक्ट जैसे आप अभी इस कॉल पे आए, आई एम श्योर एवरीबडी हु इज ऑन दिस कॉल राइट नाउ is there for their dreams and they will understand whatever you will have to share, है ना? इस कॉल पे क्योंकि सबका लाइक माइंडेडनेस है कि आपके भी सपने पूरे हो, मेरे भी सपने पूरे हो, किसी और के सपने पूरे होंगे तो मेरे को भी इंस्पिरेशन ही मिलेगी, है ना? तो हाँ, इस कॉल पे आके आप शेयर करो, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपकी कंड्यूसिव like this is a safe space for you to share. When the time is right and when your seeds really mature, you can definitely share with everybody you like. Thank you. Ma'am, I had a question. हरिओम मैम। आपका नाम आप लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। Miss, my name is Gina. I just joined yesterday. A friend recommended. So I'm a little lost in this journey because it's my first day. I had 2 questions. What is landmark, which I am not aware of? You don't have to research about it. That is a parallel program, and it's much like I've given I think 5 to 6 years of my life, and it's a little confrontive. Magic book is the easier version of it. So be in this program at the moment. Do this 100%, and later when you want to do, go ahead and do the program. But right now, Magic book is a complete program in itself. Much I had only one question. Like I have 2 children. One is 14 and the other is 17. yeah. They are not focused. They've deviated away from their path. So I don't. It's the Magic book, right? Sorry. It's the first time that you're doing this book, right? Yes. You attend today's class? Yes, I did. Yeah. So in the end, it talks about what are your dreams, right? Yes. Please write down your dream for your kids. Okay, thank you. Sumita ji asked a similar question to yours. मैम Yeah. मैम 1 minute प्लीज। Anchi, मैम say. मैम मैं स्नेहा हूँ उज्जैन से। मैम मैं लिख नहीं पाती हूँ। आई डिड नॉट गेट टाइम टू राइट, तो मैं क्या करूँ मैम? तो टाइम निकाल लो, मतलब नहीं, घर में बहुत सेवा है मैम, हस्बैंड की बहुत सेवा है, स्नेहा तो जी मैं ना 1 घंटे से भी लिख तो नहीं पाती मैम। आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? मैं आपकी कैसे मदद कर सकती नहीं हूँ? तो मैं मतलब क्या करूँ मैम? नहीं, आपका हाथ चलता है वैसे, मतलब लिखने के लिए? नहीं आई कैन, मतलब मैं लिख सकती हूँ मगर आई डोंट हैव टाइम। स्नेहा जी, वो तो आपको और आपके सपनों के बीच में है, मतलब उसके बारे में मैं क्या कर सकती हूँ ना। अगर मैं वर्बली बोलूँ तो मैम। आप अपने लिए अगर 1 घंटा इस कॉल पे निकाल सकते हैं, 1 और घंटा अपने सपनों के लिए निकाल सकते हैं। मैं आपको कोई जड़ी बूटी नहीं दे सकती जो आप खा के मैजिकल बन जाएंगे। अगर आप उसकी उम्मीद कर रहे हैं तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। बट आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूंगी कि मैं ना रात को एक टाइम बैठ के लिखूं। असाइनमेंट मॉर्निंग में करनी होगी स्नेहा जी, कल से मॉर्निंग में आएगी। रात में करने से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होएगा। जी मैम, मैं ट्राई करूंगी कि मॉर्निंग में या नाइट में अपने नोट्स तैयार करूं। पहले आज की असाइनमेंट कीजिए, आप पहले अपने सपने बनाइए। अगर आप इस कॉल पे आ भी रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, चाहते क्या हो अपनी लाइफ के लिए, अपने हस्बैंड फर्स्ट टाइम आई हूँ मैम। हेल्थ के लिए क्या चाहते हो, सपने क्या है आपके? नहीं, मेरे को हेल्थ, मनी एंड घर चाहिए। हाँ, तो आज स्नेहा जी आप इसकी लिखित सूची बनाइएगा कि आप अपने हेल्थ में, अपने हस्बैंड के हेल्थ में, अपने करियर में, अपने हस्बैंड के करियर में चाहते क्या है। आराम से बैठिए, चाहते क्या है ना, वरना तो जिंदगी चल ही रही है। सब लोग सरवाइव तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई गलत बात थोड़ी है। ये जर्नी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को मैजिकल बनाना चाहते हैं। अब कोई बनाना ही नहीं चाहता और कह रहे हैं मैं क्या करूं, मैं मैजिकल नहीं बनाना चाहती, तो उसका तो मेरे पास कोई आंसर ही नहीं। मैजिकल तो मैं बनाना चाहती हूँ मैम, तभी तो हमने ये ग्रुप ज्वाइन किया है मैम। हाँ, तो बस फिर जो ये बुक कहेगी उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। I have one question. 1 second, ठीक है? Yes, sir. Thank you. Yes. Yeah, this is Rupal from Mumbai. Annie, as I told you, I am running my blood bank, right? So to gratitude my business, like I always inner feeling I am always having कि मैं मेरा business का growth मांगती हूँ, तो like someone has to get वो बोलते हैं ना कि जिसको blood की जरूरत पड़ेगी, means getting my point, like I can't pray for my business कि भगवान और लोगों को बीमार करो और लोगों के एक्सीडेंट करो तो मेरे पास आए.
So how do I give gratitude to my business? I don't understand. We To will, increase my business. this question a lot of doctors also have, a lot of Yeah. जो लोग स्कैनिंग वगैरह करते हैं वो उनका भी रहता है. What I do is I just share कि मैं अभी ऐसे, as I told you, I always do ब्रह्म मुहूर्त का this thing. उसमें मैं ऐसा बोलती हूँ कि at least जितने भी needy persons है for blood or its components, वो सबको मेरे पास पहुंचा है भगवान. That is okay. बराबर ना, नीड जिसकी रहेगी प्लीज कम टू मी. And They see, all are coming to me. we need more authentic, grateful doctors and these providers in the world. We Yeah. do. So it's always nice to have nicer people provide all these services to us, who are authentic to their job. Yeah, but how to give gratitude? Like we can't be greedy यार for our business. I can't pray कि भगवान सबके accident करवा दो. But see, it doesn't have to be that way. Abhi, let's do chapter by chapter. Okay, आज chapter ने हमें बोला, what are your dreams? आपका maybe हो सकता है that by selling you probably get some money, probably, right? Or maybe आपका होता होगा you want to reach certain number of clients. At this moment, just do how much do you want it to be? Right? I think that's the final focus that you have. You probably do not care much about, who is taking your blood. You care about the amount of blood you're giving, right? Okay, correct. Focus on the final result. That is, what is it that you want? The how, the book says you don't have to put your mind to, right? Okay. Thank you, Annie. Thanks for explaining. Thank you. Business and everything we'll do as the chapters proceed. Okay. Yeah. 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 Thank you. Any other question? I think we've had enough. आज आपको मेरे से ज्यादा बात करने की नीड नहीं है. आपके सपने देखिए, आप अपनी जिंदगी को किसी भी और से कहीं ज्यादा बेहतर समझते हैं. आज आप आराम से बैठिए, अपनी खाली नोटबुक लें और उसके अंदर एक लिखित सूची बनाएं कि आप अपने जीवन में क्या क्या चाहते हैं. अपने पर्सनल लाइफ में, काम में, बच्चों में, रिश्तों में, पैसे में, छुट्टियों में, जो भी आप चाहते हैं. ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं. So thank you everyone for being in this journey. Thank you so much. See you all tomorrow. Have a beautiful day. Thank you. Thank you so much. Thank you, Annie. Thank you. Thank Everybody you. have a very good day.